dear students, welcome back to NPS Official. Welcome back to another helpful video. In this video, I'm going to provide you some basic paper presentation tricks. You should have to follow them. First of all, on your sheet, you have to write the subject name. जो भी जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा सबसे पहले आपने वो राइट करना है. Like this, you have to write the subject name. Make it a little bit attractive by putting some lines side by side. Don't forget to underline the word whichever you have written with a marker. एज यू ऑल नो कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो तो होता ही सेपरेट है. आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने तो इन सब्जेक्ट के बाद आपने हेडिंग देनी है सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव पार्ट लाइक दिस. अगेन यू हैव इट a boundary like this or something else you can do also on your own choice. Also don't forget to underline it. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर ही लिखा होगा कि आपने क्या करना है. सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ठीक है. तो आपने सेम एज इट इज़ वही वाला जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पर और इसके सब्जेक्टिव के बाद वो राइट करनी है. Also make its boundary like as already I have told, don't forget to underline it. सेक्शन 1 के बाद या जो भी आपका सेक्शन आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी, तो आपने इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर लिखना होगा, ठीक है. You have to write question number 1, 2, whatever it is. Question number, assume it like 3. Again, give it a boundary. Don't forget to underline it also. After this, you have to write whether you are going to attempt short question answers first or the long question answers. So let it be short questions. Again, make its boundary. काइंडली अवॉइड करने आपने जो आप फ्लावर्स, हार्ट्स और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जस्ट आपने सिंपल एक बाउंड्री देनी है उसको. द नेक्स्ट वेरी थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर. शॉर्ट क्वेश्चन आप कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है. आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड कर रहे हैं तो सेकंड, थर्ड कर रहे हैं तो थर्ड. जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने लगे हैं इसकी भी आपने सिमिलरली वैसे ही बाउंड्री बनानी है और कोशिश करनी है आपने कि आप क्वेश्चन की हेडिंग दें. क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है. लाइक जैसे अगर आपको आ गई है बायोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है तो आप यहाँ पे सिंपली लिखें बायोलॉजी. और ये भी कोशिश करें कि जो आपको डेफिनेशन आए उसको अंडरलाइन तो करना ही करना है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज़ मार्कर से लिखनी है आपने उसको अंडरलाइन भी करना है. देन यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन. Try to write the definition in the mid of the page like this. Also put inverted marks over it. And if you are writing the explanation, you can also write on the corners of the also, but put the definition in the middle and also
put inverted commas in it. So students, I hope so you have find this video helpful. Don't forget to subscribe and press official.